हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के सेशन में। आज है हमारा टॉप 100 बूस्टर क्वेश्चंस का डे 3, जहां पे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 75 तक डिस्कस। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज यू ऑल नो, माय नेम इज आंचल सिंह। आप सभी अभी तक जान चुके होंगे मुझे। आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। जो लोग भी नए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। अनअकैडमी आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करते के साथ आपको मेरा नाम टाइप करना है, ANCHALSINGH, राइट। और आपको फॉलो बटन पे हिट करना है, राइट। जैसे ही आप फॉलो बटन पे हिट करेंगे आपको सभी फ्री क्लासेस यहाँ पे अवेल हो जाएंगी, जिन्हें हम स्पेशल क्लासेस कहते हैं। और आप एन लाइव कोड इस्तेमाल करके, हमारे कोड का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, आप इस कोड का इस्तेमाल करके 10% इंस्टेंट डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, अगर आप मेरी प्लस की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो। राइट, कैसे करेंगे? चॉइस ऑफ एग्जाम सिलेक्ट करेंगे, मंथ सिलेक्ट करेंगे, प्लान सिलेक्ट करेंगे, कितने महीने का प्लान आपको लेना है। इफ इट इज 6000 मान लीजिए, तो जैसे ही आप मेरे कोड का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे, इट विल बिकम 5400। वाई? You get a discount, instant discount of rupees 600, which will make your fees 5400. Then you can proceed to pay. Okay, this is the schedule. Please have a look on the schedule once. Have a look on the schedule. Okay, 6:30 to 7 a.m. Wi-Fi Study Studios, as you all know. 10 a.m. to 11 a.m. on Academy Plus. 11:30 to 1:30 p.m. on Academy special classes, where the classes are totally free. 2 p.m. to 3 p.m. Wi-Fi Study Bank exam. 10:30 to 11 a.m. just English channel, right? Okay, let's get started with the session. I hope this was all about me and the session. And one more thing I would like to tell you, that do like, share and subscribe to the channel, and also like the sessions if you like it. Okay, so the first question of today's session is, if there is nothing to absorb the energy of sound waves, they travel on plan, but their intensity dash as they travel further from their source. Everlasting decreases, always improves, forever inclines, steadily deflates, indefinitely diminishes. Which one of the following will be the correct answer? If there is nothing to absorb, कुछ भी absorb करने के लिए है ही नहीं. The energy of sound waves, they travel on everlasting, they travel on always, they travel on forever, they travel on steadily, they travel on indefinitely, but their intensity as they travel further from their source. Which one of the following will be the correct answer over here in this question? You have got 30 seconds to answer the question. जल्दी से बताइए क्या होगा correct answer इस question का. The correct answer here will be option number E. Travel on indefinitely, but their intensity diminishes as they travel further from their source. This will be the correct answer of the following question. Next, the move to allow dumping of mercury resulted an outcry, provoked an outcry, incited an outcry. Outcry matlab हाहाकार मच जाना, right? Activated an outcry, angered an outcry from residents of the area that high levels of mercury will affect their health and insist, fear, determined, accept, believe to destroy ecologically sensitive forest area. Which one of the following will be the correct answer of this question number 52? You have 30 seconds to answer. Comment box पे, live chat पे आप comment करके मुझे answer बता सकते हैं, and you will see what will be the correct answer within 30 seconds. Okay, so the correct answer to this question is option number A.
right? Mercury resulted. No, 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 not A. I think we should go with option number B, right? Provoked. Mercury provoked an outcry from residents of the area that high levels of mercury will affect their health and fear to destroy ecologically sensitive areas, forest areas. Okay. Next question. The pilot knew she would be able to see the dash lights of the city from her cockpit window, but she would not see the fireworks explode to welcome the new year as she would have dashed to cruising altitude. Few lights, divine lights, glistening lights, shining lights, glittering lights, right? She would have soared to cruising altitude, escalate, jumped, reached, climbed. Which one of the following will be the correct answer? Any time for this question starts now. या चलिए बताती हूँ मैं आपको करेक्ट आंसर क्या है. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. आंचल मैम को अकेडमी पे जाके आप फॉलो कर सकते हैं. द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए विच सेज द पायलट knew she would be able to see the few lights of the city from her cockpit window, but she would not see the fireworks explode to welcome the new year as she would have soared to cruising altitude. Next, there can be no denying of no denying the fact that in sports star coaches have the apprehension, have the ability, have the fear, capability, desirous to get something extra out of their work, out of their teams, member, house, players. Which one of the following will be the correct answer here in question number 54? ब्लैंक्स को लगाइए, एलिमिनेट कीजिए. आपको अगर लगता है देयर हाउस तो होगा नहीं, देयर मेंबर तो होगा नहीं, देयर प्लेयर्स हो सकता है, बट डिजायरस, क्या यहाँ पे डिजायरस लगेगा? अगर नहीं तो आपका ऑप्शन नंबर ई भी एलिमिनेट हो गया. सो वी आर ओनली लेफ्ट विद टू ऑप्शन एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी एबिलिटी एंड टीम्स, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन. बायोलॉजिकल क्लॉक्स आर ऑफ ब्लैंक, immense, great, ultimate, high, no adaptive value to animals since it assumes, regulates, created, engulfs, governs nervous and physiological functions of the body. So, which one of the following options will be the correct answer of question number 55? चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें. आंचल मैम को अपन अकेडमी पे जाके फॉलो कर सकते हैं बाय टाइपिंग माय नेम ENCHALSINGH and you are watching me here at Wi-Fi Study Studios channel, India's number one platform, जहाँ पे हम पढ़ाई करते हैं आपके सपने को साकार करने के लिए. Okay, so the correct answer to this question is option number B again. Biological clocks are of great adaptive value to animals since it regulates nervous and physiological functions of the body. Next question in the list, around the bend. Okay, around the bend का मतलब क्या होता है? Outstanding, crazy, energetic, indifferent. You have got 30 seconds. जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए correct answer? Outstanding, crazy, energetic, indifferent. अराउंड द बेंड का मतलब होता है क्रेजी, राइट? अराउंड द बेंड की मीनिंग होती है क्रेजी. नेक्स्ट, बाय अ लॉन्ग शॉट का मतलब क्या होता है? Act of bravery, to take the risk or to go to any extent, a wide gap to any extent or at all. Which one of the following will be the correct answer? Act of bravery.
to take the risk or to go to any extent, wide gap, to any extent or at all. Which one of the following will be the correct answer? Actually, I'll tell you the answer to this question. The correct answer to this question is option number D, to any extent or at all. ठीक है, by a long shot. Halcyon days. Halcyon days का मतलब क्या होता है? Important days, peaceful days, tough days in the past. Which one of the following will be the correct answer of this question? Important days, peaceful days, tough days या फिर in the past. आपने कई बार इन वर्ड्स को देखा होगा क्वेश्चंस के पैटर्न में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी कई बार ये पूछा गया है. I've seen. So which one of the following will be the correct answer? Which one of the following will be the correct meaning of the phrase halcyon days, important days, peaceful days, tough days, या फिर in the past? I'll definitely tell you the answer, but first you have to give me the answer to the following question. Okay, so the correct answer to this question is halcyon days का मतलब होता है peaceful days, right? Okay, next question. Hit below the belt, ये तो हर किसी को पता होना चाहिए. The correct answer should be to harm, to stimulate, to strike unfairly, to surrender या फिर nothing. बताइए, hit below the belt. When you hit below the belt, what are you trying to do? You're trying to harm somebody, you're trying to stimulate somebody, you're trying to strike somebody unfairly, you're trying to surrender someone. Which one of the following will be the correct answer? Yes, very true. I know आप सभी ने सही जवाब दिए होंगे इसके. So the correct answer to this question is to strike unfairly. Next, be off colors. Look ill, look cheerful, hidden या फिर dead. आप जब बीमार होते हैं, आपको सर्दी, बुखार, खांसी कुछ ऐसा हो जाता है या फिर कोई भी ऐसी तबीयत खराब हो जाती है आपकी जनरली किसी भी वजह से, सो आप क्या दिखते हैं? आप ऑफ कलर्स दिखते हैं, राइट? तो ऑफ कलर्स की मीनिंग क्या होती है? इल दिखना, चेयरफुल दिखना, हिडन दिखना या डेड दिखना. Which one of the following will be the correct answer of this question? Definitely true. The correct answer will be look ill, right? इसका मतलब होता है बीमार सा दिखना. चलिए, next question. In the next question we have rearrangement of sentences, the most interesting part of the booster. Let's rearrange. Okay. Last month, the FCA issued a proposal to relax listing conditions for state-owned issuers wishing to qualify for the London Stock Exchange premium listing segments. The exchange's gold standard segment governed by stringent regulations. In its consultation paper, the FCA states that sovereign owners tend to be different from private sector. In its consultation paper, individual or entities, both in their motivations and in their nature, it is a valid assumption and precisely the reason why SOEs should not be very given preferential regulatory treatment amid intense competition for the anticipated listing of Saudi Aramco, the world's largest oil company owned by the Saudi state. Stock exchanges and financial market regulators are under pressure to provide incentives for the company to dual list its shares abroad. The proposal is presented as a merry technicality, but it is significant for reasons that extend beyond Saudi Aramco. In fact, it implies that regulators now believe the state-owned enterprises deserve special regulatory treatment. The United Kingdom's Financial Conduct Authority seems to be bowing to that pressure. अब आपको बताना है यहाँ पे correct rearrangement क्या होगा. Which one of the following will be the correct rearrangement? आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछे गए. क्वेश्चंस पूछा गया है सबसे पहला कि थर्ड स्टेटमेंट क्या होगा. आई गिव यू अ मिनट टाइम. आप 1 मिनट का समय ले लीजिए और उसके बाद रीअरेंज कर लीजिए. आई डोंट थिंक सो 1 मिनट से ज्यादा आपको समय लगना चाहिए इसको रीअरेंज करने में. एंड देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चंस पार्ट. ओके, टिल देन यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आल्सो लाइक द सेशन. और आंचल मैम को अनअकैडमी में भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं. Take your time, and answer the correct question.
चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन की ओर और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, थर्ड नंबर क्वेश्चन, राइट। तो आपके हिसाब से अरेंजमेंट क्या होगा, थर्ड नंबर क्या होगा, प्लीज keep a check the way I'm doing it, right? So according to me the third sentence would be option number C जहाँ पे A है, right? तो मेरे हिसाब से थर्ड सेंटेंस है ऑप्शन नंबर C. 1 2 3 4 5 6, yes, 6 questions are there. So मेरे हिसाब से according to me the third sentence is option number A, right? Let's move ahead and solve the rest. Last according to the sentence, अब आपके हिसाब से last sentence कौन से होने चाहिए? According to me the last sentence is option number A, sorry, A यानी कि option number C. It is a valid assumption, right? This is the last one according to me. Which one of the following is the first sentence? So according to me the first sentence of the rearrangement is option number D. आई होप आप लोग मैच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से आपके सेंटेंसेस और मेरे सेंटेंसेस अलग हैं, सही हैं. यू हैव टू फाइंड इट आउट. सी, ओके. ऑप्शन नंबर डी इज द फर्स्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट, fifth statement. Which one of the following is the fifth statement, right? So according to me the fifth statement of this question is option number B. First, second, third, fourth, fifth, yes. Now we are only left with two options. Let's see which one has been asked. The second number sentence has been asked. So the second number sentence will be option number F. Option number E, yani, right? And here will be option number E. So let's read out the sentences once and find out if this is the correct arrangement or not. Amid intense competition के बीच में for the anticipated listing of Saudi Aramco, यहाँ पे नाउन का यूज किया गया है पहली बार, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनी, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है. दैट इज व्हाई दिस इज माय फर्स्ट सेंटेंस. The United Kingdom's Financial Conduct Authority seems to be bowing to that pressure. Which pressure? Under pressure. Easy to connect, है ना? अंडर प्रेशर, इस प्रेशर को कनेक्ट करने के बारे में बात हो रही है. उसके बाद हम बात कर रहे हैं लास्ट मंथ द एफसीए इशूड अ प्रपोजल टू रिलैक्स, प्रेशर को रिलैक्स करने के लिए, लिस्टिंग कंडीशन फॉर स्टेट ओन्ड इशूअर्स विशिंग टू क्वालिफाई फॉर द लंदन स्टॉक एक्सचेंज प्रीमियम लिस्टिंग सेगमेंट, द एक्सचेंज गोल्ड स्टैंडर्ड सेगमेंट गवर्न्ड बाय स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस. ओके, देन द प्रपोजल यहाँ पे देखिए ये वर्ड प्रपोजल लिखा हुआ था, वी कैन कनेक्ट इट विद दिस. The proposal is presented as a merry technicality and so on. Okay, then we have option number B. It implies that regulators now believe that state-owned enterprises deserve special regulatory treatment. And then in its consultation paper, the FCA states that sovereign owners tend to be different from private sector individual of entities, both in their motivation and in their nature. And then the last sentence we are only left with, it is a valid assumption. ये जो बोला जा रहा है ये एक valid assumption है, क्योंकि precisely the reason why SOEs should not be given preferential regulatory treatment. That's it. This is the whole arrangement of the following sentence, D, F, A, E, B, C. Okay, so here you have to tell me the appropriate synonym of the word cult. Cult का appropriate synonym यानी similar meaning word आपको बताना है, ठीक है? Cult means what? Cult एक जिम का भी नाम है. तो cult में जब आप जाते हैं तो आप क्या करते हैं? आपकी body fat क्या होती है? So denomination, disbelief, atheism या fairness? The correct answer to this question will be option number A, denomination. Choose the most appropriate synonym of the word arduous. Arduous का मतलब क्या होता है? Graceful. क्या arduous का मतलब graceful होता है, easy होता है, effortless होता है, onerous होता है? You have to tell me the meaning of the word arduous. Onerous word की मीनिंग क्या होती है? आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं. आपको सिनोनिम बताना है. आर्डस का मतलब बहुत ही हैवी फील करना, बहुत बर्डनसम फील करना, राइट? बहुत हैवी, बहुत बर्डनसम फील करना. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ओनरस. ओनरस का मतलब भी सेम होता है. Which one of the following is the most appropriate? Apparent. Apparent तो आपको पता ही है. Apparent का मतलब क्या होता है? Evident, obscure, obvious,
एक्सक्यूज मी फॉर दैट. एपरेंट की मीनिंग क्या होगी बताइए जल्दी से. एविडेंट, ऑब्सक्योर, ऑब्वियस या फिर प्लेन. यस, एपरेंट मतलब विजिबल, क्लियरली विजिबल, राइट. सो द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, सॉरी, क्लियरली विजिबल ऑपोजिट बताना है, राइट, एंटोनिम बताना है. सो एपरेंट, ऑब्सक्योर मतलब अनक्लियर. I thought obvious. Okay. So unclear is the correct meaning of the word apparent. यहाँ पे भी आपको बताना है antonym of the word fostering. Wow. Okay. Fostering is a very good word. Fostering मतलब foster करना, nourish करना, free करना, independency देना, right? So which one of the following will be the correct antonym of the word? Encourage, suppress, further, promote. The antonym of the word will be option number B, suppress. Next question. Synonym of the word impropriety. Impropriety. Oh, यहाँ पे भी आपको impropriety दे दिया गया है. Definitely ये आंसर तो नहीं बनने वाला है, right? तो आपको बताना है synonym of the word impropriety. Impropriety का मतलब क्या होता है? Impropriety, politeness, propriety या फिर wrongdoing. The correct answer to this question is option number D, wrongdoing. Okay, next. Antonym of the word report. Report word का मतलब क्या होता है? Report word का मतलब काफी affection होना, right? Affection रखना दूसरे के प्रति. इसका opposite बताना है आपको. Attraction, empathy, affinity या फिर coldness. Which one of the following will be the correct answer? And your time for this question starts now. We are already discussing a lot of question, antonym and synonyms of the word. So attraction, empathy, affinity, coldness, क्या होगा correct answer? The correct answer to this question will be coldness, है ना? किसी के प्रति आप affection रखते हो, empathy रखते हो, और अगर उसका opposite देखोगे तो cold होना, rude होना, मतलब affection नहीं रखना. Next question. Cleave. What is the meaning of the word cleave? What is the antonym of the word cleaved actually? Fragmented, combined, spilled या split या फिर riven. Which one of the following will be the correct answer of the word? Cleaved. Cleaved का मतलब क्या होगा? Fragmented, combined, split या फिर riven. Antonym यानी opposite बताना है. Cleaved यानी cleaved हो जाना, दो parts हो जाने, right? So definitely the antonym will be what? The antonym will be combined. Okay, the next word we have here is premeditated. Premeditated का synonym बताना है आपको. Premeditated word का मतलब आपको समझ आ ही रहा होगा, तो इसका synonym क्या होगा? Spontaneous, planned, unintentional या accidental. Which one of the following will be the correct meaning? Premeditated, किसी चीज को pre-plan करके रखना. Sorry, I think I already told you the answer. So the correct answer to this question is planned करके रखना, right? चलिए, next question is leverage. Leverage word का मतलब क्या होता है? Leverage word का synonym क्या होगा? Leverage means what? Purchase, weakness, impotence, powerlessness. Which one of the following will be the correct answer of the word leverage, right? So leverage का मतलब क्या होता है? Leverage का मतलब बहुत सारी चीजें मिल जाना, ठीक है, शॉपिंग पे जाना और एक के साथ एक फ्री मिल जाना. So what will be the correct synonym of the word leverage? The correct synonym will be option number A, definitely purchase, right? Okay, last word of the session where we are discussing top 100 booster questions, which will boost your confidence, which will help you in enhancing your skills, and it will give you a wide view that which level you need to practice for. So I am giving, these are little above average questions, definitely quite difficult questions, but definitely you need to come up to this level. So start working hard, tighten your belts, roll up your sleeves and start doing it. ट्रोमैटिक वर्ड का एंटोनिम बताना है आपको. ट्रोमैटिक मतलब ट्रॉमा में जो हो, ठीक है, थोड़ा डिस्ट्रेस सा हो, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिस्ट्रेसिंग, शॉकिंग, सूदिंग या डिस्टर्बिंग. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, राइट? अगर कोई ट्रॉमा में है, तकलीफ में है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? द ऑपोजिट वर्ड विल बी ऑप्शन नंबर, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी, सूदिंग.
So I hope you people have noted the words which we discussed just now. इनके antonyms synonyms आपको समझ आए होंगे और आपने इनको note किया होगा because they are definitely going to help you a lot. So keep using these words. Only writing and only watching here will not help. Please write it down. Please make use of it so that you don't need to remember the meaning of the words. You automatically know the meaning of the words. Okay. So see you guys in the next session. Thank you for joining me in the session. Till then, take care. Goodbye. Have a good day. Signing off. Anchal Singh. Do like, share, and subscribe the channel, and also like the session.